7 minutes late. Hi everyone, this is Saloni, your host from Team Pankhuri, and I hope you all are doing absolutely great. And I am really sorry that there was a little bit of delay here. Actually, there was some technical glitch happening, and we were just trying to solve it, and that is why we got a little late. I hope that you all are not that angry on us. And yeah, so थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो रहा था, इस वजह से लेट हो गया. अदरवाइज आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लासेस हमेशा टाइम पे स्टार्ट हो जाती हैं. सो वी आर रियली सॉरी फॉर द डिले, but don't worry, the session is going to be great. And before starting the session, there are just few things. I will quickly do that and we will start with the session. Okay? सेशन स्टार्ट करने से पहले बस बेसिक सी 2-3 चीजें हैं जो हम समझ लेंगे एंड उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे. Okay? So the very first thing is that we are going to have the session in both Hindi and English. Dakshita will be speaking in one language and I'll be translating the same in the other language. Okay? So ये जो हमारा सेशन होगा मैक्रॉन का, ये दोनों ही जो लैंग्वेजेस हैं उनमें होगा. चाहे एक हिंदी में और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा. दक्षिता एक लैंग्वेज में बताएंगी, फिर मैं वो सेम चीज दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूंगी. Then the second thing is the PDF and the products have already been uploaded on the app. So don't worry, I will show you in the end that where you're going to find all of them and you do need not to worry about anything here. Okay? जो PDF और products हैं वो सारी की सारी चीजें ऐप पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं. तो मैं सेशन के एंड में आपको दिखा दूंगी कि आपको कहाँ पे मिल जाएगा ये सब कुछ. Third thing is, if you have any question or queries during the session, you can just write them down in the chat box and we will try to take maximum of the questions. If there'll be any questions which will be left, then those will be taken in the on the app, and where you can ask those questions, I will let you know, but in the end of the session. Okay? So कुछ questions हम आज यहाँ पे लेने की भी कोशिश करेंगे, but अगर कुछ questions बच जाते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वो हम app पे ले लेंगे. And yes, I think we can start with the session as we are already a little late. Over to you, Dakshita. Hi guys, hello everyone. Hey, so today is our Macarons class. Okay. So we have a Macarons class today. We'll be making French Macarons today, which is like the simplest of all Macarons. Just 4 ingredients, which are the main ingredients. Guys, before starting the session, there are no replacements for these 4 ingredients, okay? So you need to have castor sugar, you need to have icing sugar, you need to have aquafaba, and you need to have almond flour, okay? There is no replacement for these ingredients. 2 ingredients which are optional are cream of tartar and your gel colors. Okay? And let's start. Okay. So आज जो हम अपने मैक्रॉन्स बनाएंगे उसमें बेसिकली केवल 4 इंग्रेडिएंट्स होंगे जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी. बट ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप किसी भी और चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते. जैसे कि हमारे जो 4 इंग्रेडिएंट्स होंगे वो आलमंड फ्लावर होगा, एक्वाफाबा होगा, कैस्टर शुगर होगी, एंड व्हाट वाज वन लास्ट थिंग दक्षिता? Icing sugar. What was it? Icing sugar. Your voice is not clear, Dakshita. It's icing sugar. Icing sugar, yeah. Sorry. Yeah. So yeah. So 4 चीजें होंगी, कैस्टर शुगर, आइसिंग शुगर, उसके बाद हमारा आलमंड फ्लावर और एक्वाफाबा. ये 4 चीजें होंगी जो हम यूज करेंगे. एंड इन 4 चीजों को आप किसी भी और चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. इसमें से एक भी चीज आप रिप्लेस नहीं कर सकते. एंड डोंट वरी, वी विल टेल यू दैट व्हाट एक्वाफाबा इज. एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर. यस दक्षिता. Okay.
So we first start by taking aquafaba in our bowl. We have this aquafaba. Aquafaba is basically a replacement of egg whites in our eggless recipe. This is made out of chickpea water. Okay. तो सबसे पहले हम लोगों ने जो लिया है ये है हमारा एक्वाफाबा। एक्वाफाबा बेसिकली यहाँ पे इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हम लोग एक एगलेस अपना वो बना रहे हैं, मैक्रोन बना रहे हैं। तो हम लोग एग वाइट की जगह पे एक्वाफाबा यूज करते हैं। एक्वाफाबा यानी कि जो आपका वो होता है ना, छोले वाला चना, छोले वाले चने का जो पानी होता है उसे हम कहते हैं aquafaba. And yes, you can make aquafaba at home also. The recipe is given on Dakshita's Instagram ID that I will show you in the end of the session. Okay. Perfect. So we have aquafaba here. We have around 19 grams of aquafaba because we are making half of the recipe we have given. So this is 19 grams of aquafaba, which is chickpea water. So जो भी रेसिपी दी गई है हमारे पीडीएफ में, हम उसका आधा रेसिपी यहाँ पे बना रहे हैं। तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे लिया है 19 ग्राम एक्वाफाबा। एंड एक्वाफाबा होममेड भी होते हैं एंड बाहर के भी होते हैं। तो आप दोनों में से जो भी चाहें वो यूज कर सकती हैं। Another instrument which is very important in your macarons is your hand blender. You cannot do this without it. You need an electric blender for it. Okay. सो नेक्स्ट हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगा वो होगा हमारा ये हैंड ब्लेंडर। आप अपना जो मैक्रोन है उसको हाथ से बीट करके नहीं बना सकते हैं, आपको एक हैंड ब्लेंडर चाहिए ही चाहिए होगा उसका। Also, guys, you cannot make macarons without a weighing scale. You need to measure everything using a weighing scale. Do not try to use cup recipes for making macarons. You cannot be successful using cups if you are making a macaron. सो जब भी आप मैक्रोन्स बना रहे होंगे तो प्लीज ट्राई करिएगा कि आपके पास एक वेइंग मशीन हो, बिकॉज अगर आप कप मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए एक वेइंग मशीन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो the session that you are attending right now is an eggless session, so I will request everybody that please let's keep these egg wale questions for a little later when we will come up with our egg macarons. For now it is an eggless session, so we will keep this session and we'll keep the questions related to the eggless macarons only. एगलेस मैक्रॉन्स का सेशन है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे कि एगलेस मैक्रॉन से ही रिलेटेड हो। एंड जो भी फर्दर क्वेश्चंस होंगे एग से रिलेटेड वगैरह, जो हमारा अगर आगे कोई क्लास आएगा एग मैक्रॉन वाला तो हम उसके लिए रखेंगे। ओके, यस दक्षता। So now we'll start beating with our electric beater. For the first 2 minutes, I'll be beating it on the speed 3. For the next, I'll say 3 minutes, I'll be beating it on the highest speed of my beater, which is 6 or 7 usually. For my beater, it's 7. Okay, so 2 minutes, you beat it at the third speed. And for the next 3 minutes, beat it on the highest speed of your beater. सो अब जब हम अपने एक्वाफाबा को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब आप बीट करोगे तो 2 मिनट के लिए आपको प्रॉपरली उसको एक थर्ड नंबर की स्पीड जो होती है उस पर रखना है। एंड उसके बाद आप 2-3 मिनट जब और उसको बीट करोगे, मतलब 2-3 मिनट बीट करने के बाद जब आप बीट करेंगे तब आप अपने उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम जो भी आपके हैंड बीटर में होगी आप वहां तक लेकर के जाएंगे। एंड नेक्स्ट 2-3 मिनट आप उसके अकॉर्डिंग बीट करोगे। सो आपको 2 स्पीड्स रखनी है। सबसे पहली जो स्पीड होगी वो होगी आपकी 3 नंबर की, जिसपे आप 2 मिनट के लिए करोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे कि आप उसको नंबर 7 पे या जो भी आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी वहां तक लेकर के जाओगे एंड देन बीट करोगे। नाउ till Dakshita is doing this, I will quickly repeat everything that we have done till now, and I request everybody to pay a little bit of attention here. Okay, you are going to get the recordings later on, but
I will request you to please pay a little bit of attention here, and I do not want any kind of disturbance here. Okay? अभी तक जो भी चीजें हुई हैं मैं एक बार उसको रिपीट करूंगी, बट मुझे किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं चाहिए. आई विल रिपीट देम इन बोथ द लैंग्वेजेस. सो अभी हम बना रहे हैं यहाँ पर एक एगलेस मैकरॉन. एगलेस मैकरॉन के लिए आपको बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एंड वो चारों इंग्रेडिएंट्स रिप्लेस नहीं हो सकते हैं. सबसे पहले आपको चाहिए एक्वाफाबा, दूसरा आपको चाहिए आपका आमंड फ्लावर, तीसरा कैस्टर शुगर, एंड चौथा आइसिंग शुगर. इसमें से कुछ भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो. अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक्वाफाबा लिया है 19 ग्राम्स और उसको बीट किया है. Okay. Yes, Dakshita. Now we have cream of tartar, which we'll be adding. If you don't want to use cream of tartar, you can absolutely skip it. But if you're a beginner, cream of tartar helps in stabilizing your egg white and help in making fail-proof macarons. Like I'll say by 10%, the chances of your macarons failing reduces. So अभी हम लोगों ने इसमें ऐड किया था cream of tartar. Right now we have added cream of tartar. The reason why we have added cream of tartar is it reduces the chances of getting failed macarons. आप जब भी पहली बार या जब आप बिगनर होते हो तो बेसिकली मैक्रोन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो आपके मैक्रोन्स खराब ना हो जाएं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप क्रीम ऑफ टार्टर यूज कर सकते हो. क्रीम ऑफ टार्टर बेसिकली आपके मैक्रोन को एक अच्छा वो देगा, होल्ड करेगा उसको अच्छे से. इट विल बेसिकली होल्ड योर बैटर टुगेदर, एंड द क्वांटिटी वाज 1 teaspoon. 1/8 teaspoon. 1/8 teaspoon. Right. So you use 1/8 teaspoon of cream of tartar, which is optional. Okay. Now we keep a sieve on top and start adding our castor sugar. Guys, castor sugar is not powdered sugar. They both are different. What's the difference? We'll be dealing with them. Okay. So castor sugar, you'll be adding them in batches. You can add them in batch of 2 or 3 according to your choice. सो नेक्स्ट हमने अभी क्या ऐड किया, हम लोगों ने ऐड किया है कैस्टर शुगर. कैस्टर शुगर और पाउडर शुगर दोनों अलग टाइप की शुगर होती हैं. जब हम यहाँ पे कैस्टर शुगर यूज कर रहे हैं तो आप प्लीज कैस्टर शुगर ही यूज करिएगा, पाउडर शुगर नहीं यूज करना है आपको. Okay. So castor sugar is around 16 grams right now. सो जो हम लोगों ने कैस्टर शुगर ली है वो हम लोगों ने लिया है 16 grams. Okay, so abhi till now I have repeated the things in Hindi. I will quickly repeat everything in English once. Okay, so there are 4 ingredients that you will need to make your macarons. The very first ingredient being the aquafaba, the second thing being the castor sugar, third is the icing sugar, and the last one is the almond flour. Till now we have taken aquafaba 19 grams, and we have taken castor sugar that was 16 grams, and we have mixed them together. Perfect. Now we have to whisk it on the highest speed of your blender. So for me, it is 7. So I'll be using 7 speed. If you have 6, use 6. And we are going to form it to a stiff peak stage, which is also known as the meringue stage. Okay. So अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने इनको जो हम लोगों ने अपना एक्वाफाबा और कैस्टर शुगर ली थी उसको हम तब तक बीट करेंगे जब तक हमारी पूरी की पूरी जो ये बैटर है उसमें आपको स्टिफ पीक्स ना मिल जाए. ओके, स्टिफ पीक्स का मतलब यहाँ पे स्टिफ पीक्स को हम लोग मिरैंग्स भी बोलते हैं. ओके, जब आप कभी भी मैक्रोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसमें मिरैंग्स पढ़ेंगे. तो मिरैंग्स का मतलब होता है कि वो जो स्टिफ पीक्स बनेंगी अभी इस बैटर से. ओके, Okay. So, Saloni, while beating, is my voice audible? Yeah, just give me a minute. Your voice is absolutely audible.
Okay. So, in case you want to use aquafaba, you can use homemade aquafaba also, or you can use a store-bought aquafaba. I am using a store-bought aquafaba because it reduces the chances of a failed macaron batch. However, we also make aquafaba at home for making macarons, and we also use them. Okay. सो जो एक्वा फाबा होता है वो आप घर पे भी बना सकते हैं एंड आप बाहर का भी यूज कर सकते हैं। बाहर का यूज करने में अच्छी बात ये होती है कि आपका जो मैक्रोन्स हैं वो जल्दी खराब मतलब मैक्रोन्स क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट एंड ट्रिकी होते हैं एंड उनके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप ऑब्वियसली नहीं चाहोगे कि वो खराब हो जाए। इसके लिए हम जनरली बाहर का एक्वा फाबा यूज करते हैं बिकॉज इसमें स्टेबलाइजर्स वगैरह पड़े होते हैं, तो आपका अच्छा बन जाएगा, मैक्रोन खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड अगर आप ये सीखना चाहते हो कि घर पे कैसे बनता है एक्वाफाबा, तो आपको उसकी रेसिपी जो है दक्षता के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी। मैं आपको सेशन के एंड में दिखा दूंगी कि आपको कहाँ मिल जाएगा। ऑल्सो आई कुड सी वन क्वेश्चन दैट what how much amount of cream of tart have we added. So we have added 1/8 teaspoon of cream of tart. हम लोगों ने 1/8 स्पून क्रीम ऑफ टार्ट इसमें ऐड किया है एंड हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक हमें स्टिफ पीक्स ना मिल जाए। ओके, and also guys, don't worry, all the ingredients have already been listed on the app. You can check there and you can buy the ingredients from there, and also the PDF have been listed there. PDF भी आपको ऐप पे मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे है, अभी प्लीज उसके लिए परेशान मत होइए। यस दक्षता। So your castor sugar, guys, cannot be made at home. Castor sugar, how is it different from your powdered sugar? Your castor sugar has very fine particles or granules. The sugar which you use at home, uska the minute size of that sugar is castor sugar. However, your powdered sugar is in powdered form. It does not have particles, and that will create a lot of texture difference and a lot of difference in your macarons. Also, brand for aquafaba is American Garden, which I am using. There's another brand which is easily available on Amazon, and I'll text the name for the same to you guys. Okay. So there was a question, Dakshata. Oh, she's beating. She would not be able to. Yeah. No, Rashi, you cannot replace it with the cashew flour. Please use the almond flour only. Charu, I'm not very sure of it. Just give me a minute. Once Dakshita will finish beating it, I will surely ask your question. Okay. Yeah. Rash. Oh, okay. Yeah, Rashi, just give me a minute. I will quickly ask. Okay, so Sarya, Shani, there is no like such beating method. You just have to go in the round motion, and that is how you are going to beat it. For the timing and speed is for first 2 minutes, you are going to beat it at speed 3. Then after 2 minutes, you are going to beat it at the highest speed for next 5 minutes. Okay? Sorry, next 3 minutes. Okay? So there are two beating speeds. One is 3, on which you're going to beat it for first 2 minutes, and then you're going to go to the maximum speed for last 3 minutes. Okay, and yes, all the ingredients are at normal temperature. If you want to know the recipe for making the almond flour, that is also given on Dakshita's page. I will tell you how it is done. Yes, Afreen, it is 19 ml only, but when you measure things on the weighing scale, no, so we are in a habit of saying it in grams. ओके सो हाँ, सो हम लोगों ने क्या किया है कि मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ जो बीटिंग स्पीड होती है ये सब कुछ। तो जब आप अपने एक्वाफाबा को और कैस्टर शुगर को बीट कर रहे होगे तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले 2 मिनट के लिए उसको स्पीड 3 पे बीट करना है, यानी कि आधी स्पीड पर बीट करना है।
उसके बाद 2 मिनट के बाद आप उसको सबसे आपके उसमें जो मैक्सिमम स्पीड होगी ना उस पे जाइएगा एंड उस पे अगले 3 मिनट के लिए उसको बीट करिएगा। तब तक 3 मिनट के बाद आप देखोगे कि आपको उसमें अच्छे से ऐसे स्टिफ पीक्स जैसे मिलने लगेंगे। ओके। Yes, Shirangini, it is 19 mls only, the aquafaba. Okay. Okay, so So if this, somebody has, yes, Dakshita. okay, this beating will take around 8 to 12 minutes, may also take up to 15 minutes. So what you are looking for is a stiff peak stage. So जब आप अपने इसको बीट करोगे ना तो आप देखोगे कि आपको 8 से 10 मिनट भी लग सकता है या फिर 12 मिनट भी लग सकते हैं। आप बेसिकली इसको तब तक बीट करोगे जब तक आपको स्टिफ पीक्स नहीं मिल जाते। जैसे अगर आपने कभी विपिंग क्रीम के साथ काम किया होगा तो आप देखते हो कि उसको विप होने में अराउंड 5 से 7 मिनट लगता है। बट आप उसको तब तक विप करते हो जब तक आपको उसको उसमें स्टिफ पीक्स नहीं मिल जाती हैं। सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। आप तब तक मिक्स करोगे जब तक आपको स्टिफ पीक्स ना मिल जाए। नहीं 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 नहीं, नेपाली ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ ऐसा एसी वीसी नहीं चाहिए। ओके। And if somebody only has 3 speeds at their in their beater, then what you're going to do is for first 2 minutes, I believe it will be like low, medium, and high. That is how it is going to be, right? So if you're beating it in these 3 settings, for the first 2 minutes, beat it at low, and then go to the highest speed for last 3 or 4 minutes. ओके। अगर आपके बीटर में केवल 3 स्पीड्स हैं जैसे कि लो, मीडियम एंड हाई, तो आप स्टार्टिंग के 2 मिनट आप उसको लो पे करो। उसके बाद आप उसको लास्ट के 4-5 मिनट के लिए आप उसको हाई स्पीड पे लेकर के चले जाओगे। ओके। Dakshita, what was the brand for the aquafaba? American Garden. Okay, and what that aquafaba is at room temperature, right? All the ingredients need to be at room temperature. Okay. Okay, so if you can see the blender right now, there is a little peak which is forming, okay, which we know is a stiff peak stage, and we can now move ahead with the other ingredients. So this stiff peak stage is very different from a stiff peak stage your whipping cream gives. Whipping cream becomes totally immovable at a stiff peak stage. That is not how an aquafaba whips up. आप बोल लो सलोनी। ओके। सो अभी आप देख सकते हो कि हम लोग अपने स्टिफ पीक के स्टेज पे आ चुके हैं। अब स्टिफ पीक जो होता है ना वो आपका जो विपिंग क्रीम होता है उसके स्टिफ पीक से काफी डिफरेंट होता है। जैसे कि जब आप विपिंग क्रीम के स्टिफ पीक्स को देखते हो तो वो बिल्कुल एकदम स्टिफ हो जाता है, मूव नहीं कर सकता बहुत ज्यादा, उसका टेक्सचर ही बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। सो उस टाइप का नहीं हो रहा है यहाँ पे। Right. Dakshita, is it possible we can show them some like the Peaks. batter closely? हाँ, अभी Is I'll it just very add the color and then show. okay? Okay. Okay, I have yellow gel color right now, which I'll add. Only use gel colors, please, no liquid or powdered colors. This color brand is built in. You can also use Magic, you can use Chef Master, you can use Sugar In, whichever gel color you have. So अभी हमने इसमें ऐड किया है येलो कलर का जेल कलर। नाउ जो आप इसमें कलर ऐड करोगे वो जेल कलर्स होने चाहिए, लिक्विड कलर, पाउडर कलर, इस टाइप का कोई भी कलर आपको नहीं यूज करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जेल कलर्स यूज करना है। एंड यस, वही सेम जेल कलर्स जो आप अपने केक्स वगैरह में यूज कर सकते हो। ओके। नो रंजिता, यू कैन नॉट यूज द लिक्विड फूड कलर्स हियर। Look, this is a very the reason why you're not allowed to use any kind of other color is that might hamper the consistency of your batter.
I know it will sound very bizarre कि अरे we are only adding 1 or 2 drops, but remember it is macaron. These are the most stubborn things to make in the world. You do not want anything to happen here. So always play safe whenever you're working with the macaron thing. Um, Aquafaba was 19 grams and the castor sugar was 16 grams. The brand for colors could be your Chef Master, Sugarin, or any brand you are comfortable with. Yeah, don't worry, Dimple. We will show you the stiff peak consistency also. Just let her add some color because white से बहुत ज़्यादा reflection आता है तो clear नहीं होता. इसलिए we have added some color so that we could give you a better look to it. यस रेशु, आपको जेल कलर्स ही यूज करने हैं, उसके अलावा और कोई नहीं यूज करना है. कैस्टर शुगर का ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो वो कैस्टर शुगर यूज कर सकते हो. Yes, Madhumita, the colors that you use in your cakes, no, the same gel colors you can use here in the macarons also. Okay. Abhi, we have quite a lot of batter on our whisk. Can you see this batter right now? Whisk पे जो batter लगा है yellow color का. Yes, Dakshita, it is clearly visible. Which is not falling off. Can you see this batter is stable and it is not falling off? Yes. Right? This is the stage which you reach at. If the batter is falling off from your whisk, then it means that your stiff peak stage has not arrived. Okay, this is one of the easier ways which you can see. But thoda sa, agar if you see very closely, you will even see a few peaks arising out of it. Okay. Okay. So जब हम बोलते हैं कि आप स्टिफ पीक्स की स्टेज पे आ गए हो, तो हमारा ये मतलब है कि आप जैसे देख सकते हो कि हमारा जो बीटर था उस पे थोड़ा सा बैटर लगा हुआ था, बट अगर वो स्टिफ पीक्स के उस पे स्टेज पे नहीं आता ना तो वो बैटर ऐसे नीचे की तरफ गिरता रहता. बट क्योंकि वो स्टिफ पीक्स के स्टेज पे आ चुका है, इसलिए वो बैटर उस हमारे हैंड बीटर के उससे हट नहीं रहा है. तो इसे ही हम कहते हैं स्टिफ पीक का स्टेज. जब आपका बैटर आपके उससे हटे नहीं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप स्टिफ पीक्स के स्टेज पे आ चुके हो. Which means that your batter is like kind of stable and it is not dripping off. वो हटेगा नहीं, वो drip off करना शुरू कर देगा basically. Okay. Abhi we have 27 grams of almond flour with 27 grams of icing sugar, which I had already mixed. And now we'll be adding this mixture into our aquafaba mixture, but again in batches. Do not add it all together. Okay, Dakshita, both were 27 grams, right? Yeah. Okay. So अभी हम लोगों ने अपना जो aquafaba और कैस्टर शुगर वाला बैटर था, अब उसमें हम लोग ऐड करेंगे अपना आइसिंग शुगर और आमंड फ्लावर. ओके, एंड हमारा आइसिंग शुगर और आमंड फ्लावर दोनों ही 27 ग्राम्स है. सो आपको क्या करना है, आपको 27 ग्राम्स आइसिंग शुगर लेनी है और 27 ग्राम्स आपको आमंड फ्लावर लेना है. दोनों को मिक्स करिए एंड थोड़े थोड़े से बैचेस में उसको ऐड करिए. एक साथ नहीं ऐड करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐड करना है. Okay. And for mixing, you have to use the cut and fold method. Cut and fold is folding and then cutting it in between. Again fold it, cut it in between. And that's how Dakshita, can we get it a little more close? आपका एक्चुअली हाथ बार बार अच्छा रहा था इसलिए. ऐसे. So fold it and then cut it. Center से. So जब आप बना रहे होंगे अपना मैकरॉन, तो आप जब अपना ये आइसिंग शुगर और आमंड फ्लावर उसमें मिक्स करोगे तो मिक्स आप ऐसे डायरेक्टली नहीं करेंगे. आपको क्या करना है कि आपको कट एंड फोल्ड मेथड यूज करना है. कट एंड फोल्ड मेथड का मतलब है कि आप ऐसे अपना स्पैचुला लीजिए, एक बार ऐसे सर्कल बनाइए एंड देन बीच से कट कर दीजिए. फिर से सर्कल बनाइए, कट कर दीजिए, सर्कल बनाइए, कट कर दीजिए.
सो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं हम लोग कट एंड फोल्ड मेथड। यही मेथड है जो आपको यूज करना है अपने पूरे बैटर को एक साथ ऐड करने को। No, Pooja, if you are asking to add more caster sugar, mm, more caster sugar instead of icing sugar, then no, you cannot do that. There's a reason why two different type of sugars are used here. But if in case you like your macarons to be a little sweet and that is why you want to increase the consistent, You cannot even your do that. Every change in flavor or every change in sweetness will be taken by your center filling and not in your shells. No matter what flavor you want to make, this is the exact same shell recipe which you will be using. ओके। सो अगर आपको आपके मैक्रोन्स थोड़े से मीठे पसंद हैं तो आप जो सेंटर फिलिंग करोगे ना आप उसको मीठा कर सकते हो। और बट ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है जिसमें दिया गया है ना कि क्या चीज कितनी यूज हो रही है, प्लीज उसको उतना ही रखिएगा, अदरवाइज आपके मैक्रोन्स खराब हो सकते हैं। ओके। सो अगर मीठा और ज्यादा करना है तो सेंटर फिलिंग को मीठा कर दो आप, वो चलेगा, बट बाहर के जो शेल्स हैं उनकी क्वांटिटी ऐसे ही रखिएगा। So we have आइसिंग। everything mixed. How do you check that this is mixed properly is we'll try forming an 8, and if the batter is not breaking while forming 8, we know that our macaron batter is perfectly made. Could you see the 8 formation? यस अक्षता। So if you're able to form an 8, it means that the macaron batter is perfectly made and it's ready to be used. सो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा बैटर जो है उसको हम लोगों ने इसमें मिक्स कर लिया है। बट अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका पूरा बैटर जो है वो एक्चुअली में अच्छे से मिक्स हो गया है? सो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने बैटर को लीजिए एंड उससे ऐसे 8 बनाने का ट्राई करिए। अगर आप प्रॉपरली एक 8 बना ले रहे हैं एंड आपका बैटर 8 बनाने के टाइम पे टूट नहीं रहा है, इसका मतलब है कि आपका बैटर प्रॉपरली मिक्स हो गया है। इफ इन केस वो ब्रेक हो रहा है तो आप प्लीज उसको थोड़ी देर और मिक्स करिए एंड जब प्रॉपरली आपका 8 बनने लगे सिर्फ तब आप अपना मैक्रोन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। We are transferring this batter into a piping bag for piping now. Okay. I forgot to show. Piping bag में we have a nozzle which is like a round nozzle. If you can see this, it's the bada wala version. You can even use this one or the bigger round nozzle, whichever one you have. सो अभी हम लोगों ने इसको डाल दिया अपने पाइपिंग बैग में एंड आप जब इसको पाइप करोगे तो आपको उसके लिए आपके पास एक नोजल होना चाहिए जो नॉर्मल वो राउंड वाला नोजल होता है ना, वो वाला होना चाहिए आपके पास। एंड आप चाहो तो छोटा नोजल ले सकते हो, चाहो तो बड़ा ले सकते हो, जो भी आपके पास हो वो वाला नोजल आप ले सकते हैं। Now, everybody please focus on the piping technique. You can either use 2 parchment sheets or use a silicon mat which has the shapes. ठीक है, आप कोई भी use कर सकते हो. If you're using parchment paper, make sure you have 2 parchment papers. जब आप पाइपिंग की बात करते हो तो आपको क्या करना है कि या तो आप 2 पैचमेंट पेपर ले सकते हैं और या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि जो सिलिकॉन शीट्स आती है ना, जिसमें आपने देखा होगा कि ऐसे बना होता है मैक्रोन का शेप, या तो आप वो यूज कर सकते हो या फिर आपको 2 सिलिकॉन शीट यूज करनी होगी। Okay. You have to put your hand at a 90-degree angle. Okay. You'll keep this at a 90-degree angle. Do not do it tilt-handed. Do not put it like tilt नहीं होना चाहिए, सीधा बिल्कुल 90 degree पे. Put a little pressure.
to achieve your desired size, a little spoon, and just pick it up. Okay. So अभी आपने देखा कि आपको कैसे आपके मैक्रॉन्स को पाइप करना है. पाइप करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको अपने पाइपिंग बैग को बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्रीज पर रखना है. ओके. सो आपको बिल्कुल उसको टिल्ट नहीं करना है, एकदम 90 डिग्रीज पे रहेगा. एंड आपको अपने पाइपिंग बैग को तब तक प्रेस करना है जब तक आपको आपका मतलब जितना बड़ा आपको आपका मैक्रोन चाहिए ना उतने टाइम तक आप उसको प्रेस करिए. जब आपको लगे कि हाँ बस इतना ही बड़ा चाहिए तब आप उसको बस ऐसे प्रेस करना बंद करिए और अपने पाइपिंग बैग को बस हल्का सा ऐसे राउंड सा घुमा दीजिएगा. तो उससे क्या होगा कि आपको उसमें ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जैसे पीक जैसा नहीं दिखेगा. अगर आप वैसे ही छोड़ दोगे तो जब आप बेक करोगे तो ऊपर ऐसे पीक करके आएगी जो कि अच्छा नहीं लगता है. तो इसीलिए हम उसको ऐसे राउंड कर देते हैं ताकि वो उसी में मिक्स हो जाए एंड आपको वो पीक ना मिले आपके मैक्रोन में. Now we'll take this and tap it very hard across your kitchen counter or whichever counter you're working on. एंड एक बार आपने बना लिया होगा उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बहुत तेजी से अगर आप किचन काउंटर पे बनाओ मतलब आपका वो जो शेल्फ होता है ना उसी के ऊपर रख के आपको बहुत तेजी से उसको ऐसे करके टैप करना है ताकि अगर उसमें किसी भी तरीके के एयर बबल्स या कुछ भी हो तो वो हट जाए. ओके. सो यू हैव टू टैप इट वेरी like what I very hardly on the shelf so that all the bubbles or air bubbles in it would get reduced and you would get a proper macaron shell here. No, Bake of Art, we have not greased the tin actually. Dakshita, have we greased our tin? No, we're using parchment sheet, no? Okay. So yes, Bake of Arts, we have not greased our tin as we are using the parchment paper. Okay. So if you see this one, our hand was a little tilted, so ये थोड़ा तिगड़ा हो गया. Otherwise, all of them are in perfect circles. Okay. If you see any air bubble, you can also pop them using a toothpick. Okay. Sarayan, for your question, you are going to take icing sugar, take your almond flour, mix them together in a bowl, and then add that mixture to your aquafaba and castor sugar wala mixture. Okay. So right now you can see that if what Dakshita is doing is she is basically popping off all the air bubbles that is there in the macaron. अभी आप देख सकते हैं कि अगर आपके मैक्रोन में ऊपर साइड आपको किसी भी तरीके का बबल दिखे तो आप उसको ऐसे करके हटा सकते हो. यस सुजाता, आप बटर पेपर भी यूज कर सकती हैं. हीना, जब हम कलर्स की बात करते हैं तो उसमें ऐसी क्वांटिटी नहीं होती. आप एक ड्रॉप दो ड्रॉप में आपको प्रॉपरली वो कलर मिल जाएगा एंड बस एक दो ड्रॉप से ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है अदरवाइज वो आपको अजीब सा भी लग सकता है गले में. एक दो ड्रॉप में आपको प्रॉपर कलर मिल जाएगा. We'll now put this aside for the next 15 minutes so that the macarons can dry. How do we know that the macarons are dried is, if we touch the macarons on top, it should have formed a sheet and it should not be sticky. Okay? सो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे मैक्रोन्स को हम लोगों ने ऐसे बना लिया है. अब हम इसको ले जाके पंखे के नीचे रख देंगे या आप ऐसे रख देंगे अगले 15 मिनट के लिए. हम वो क्यों कर रहे हैं ताकि हमारे मैक्रोन्स के ऊपर अभी एक हमें हल्की सी लेयर बन जाए ताकि जो हमारा मैक्रोन अभी हल्का सा चिपचिपा सा होगा सो वो स्टिकी स्टिकी जैसा ना लगे. ओके. सो इसके लिए आपको ये ले जाके रख देना है या तो पंखे के नीचे रख दीजिए या आप ऐसे रख दीजिए. बस रख दीजिए अगले 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए. 15 मिनट के बाद हम इसको बेक करेंगे. Absolutely. So, No, you just have to leave it open, Veena. Just leave it open like this. Don't cover it. So this is done. We are storing it. We are like putting it out for 15 minutes because it's not very humid and it's hot. If you stay at a humid place, the making of sheet can also take up to 45 minutes. Okay. So you need to be very, very sure that you keep on checking them in the every 5 minutes, because if you over rest your macarons,
Then also you can have spread out sheets. So you need to rest them for adequate time, which can vary from 15 minutes to 45 minutes, depending upon how humid it is at your area. What you're looking for is just a sheet which does not stick to the top of your hand. ओके, सो अभी क्योंकि रक्षिता जहाँ पे रहती हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा सा एरिया है एंड बहुत ज्यादा ह्यूमिड नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो अभी 15 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगी तो उनको उसके ऊपर उनको वो लेयर मिल जाएगी कि हाँ उनको वो चिपचिपी जैसी चीज नहीं आएगी उनके हाथ में। बट अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर बहुत ह्यूमिड सा एरिया है, तो वहां पे क्या हो सकता है कि ये 15 मिनट 45 मिनट में भी बदल सकते हैं। सो आपको बस चेक करते रहना पड़ेगा कि कब वो लेयर क्रिएट हो जा रही है आपके मैक्रोन के ऊपर, एंड देन आप उसको बेक करोगे। अगर आप बहुत ज्यादा देर के लिए भी अपने मैक्रोन्स को छोड़ दोगे, तब भी क्या होगा कि आपका जो मैक्रोन है वो अच्छे से बेक नहीं होगा। सो अगर आप कम छोड़ोगे तब भी खराब हो सकता है, ज्यादा छोड़ोगे तब भी खराब हो सकता है। ओके। Okay, so perfect. We'll let them rest. Till that time, we'll make our ganache for filling. We'll be doing a white ganache filling, or you can do a brown ganache filling, dark chocolate filling. You can also do buttercream frosting. Don't do whipping cream frostings in your macarons. They tend to, soften your macarons and they don't go nicely. But any buttercream, lemon curd, cream cheese, buttercream, if I haven't used it, compotes, jams, and ganaches can go uh, inside your macarons. We'll be doing a simple white ganache filling. If you aren't aware of it, white ganache is always done in a 1:3 ratio. Okay. अगर आप व्हाइट गनाश बना रहे हो, Okay. हमेशा 1 part of चॉकलेट रहेगा और 3 part of क्रीम रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पे एक वाइट गनाश की फिलिंग। अब जब हम वाइट गनाश की फिलिंग बना रहे हैं तो यहाँ पे रेशियो रहेगा हमारा 1:3 का। 1:3 का मतलब है कि आप जितनी चॉकलेट लेंगे उसका जस्ट 3 गुना आप लोगे आपका क्रीम, फ्रेश क्रीम। ओके, एंड अगर आप डार्क चॉकलेट का बना रहे हो तो वो 2:1 हो सकता है। सो आप इसमें किसी भी चीज की फिलिंग डाल सकते हो। आप चाहो तो डार्क चॉकलेट ले सकते हो, आप वाइट चॉकलेट का कर सकते हो, जैम्स कर सकते हो, या किसी भी चीज की जो आपको फिलिंग चाहिए आप वो फिलिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, yes Randeep, you can go with that too. Mousse filling, it will be really tasty. Okay. And go with any filling, just not a whipping cream filling, because whipping cream makes it very very soft and गलना शुरू हो जाता है इन शॉर्ट मैक्रोन। हाँ, यस गाइस, रिमेम्बर दिस कि आप कोई भी फिलिंग डाल सकते हो बट विपिंग क्रीम की फिलिंग मत रखिएगा, क्योंकि विपिंग क्रीम की जब आप फिलिंग रखोगे तो आपके जो मैक्रोन्स है ना वो बिल्कुल ऐसे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट से हो जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे विपिंग क्रीम की फिलिंग नहीं करते हैं मैक्रोन्स में। उसके अलावा आप बाकी चीज क्रीम, बटर क्रीम, गनाश किसी की भी कर सकते हो। ओके। If you don't know how to make compotes and you don't know how to make your cream cheese, you can again go back to Instagram and have a look at them. However, they are not part of our class, so we will not be dealing with them right now. Ranjiti, we usually use the fresh cream for making the ganache, the fresh cream that you get from Amul, right? Okay, That fresh normal. cream. If you don't have And fresh cream, you can also use whipping cream. yes, and guys, just a second, we will be dealing with the baking part also. Just give us some time. Once our macaron will get dried up, then we will move on to the baking part. ओके अभी हम बेकिंग पार्ट भी कवर करेंगे, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। एक बार मैक्रोन हमारा थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसके बाद। Devanshi, when you're working with dark chocolate, it could be 2:1. Okay. When we say 2:1, that means it could be 2 parts of chocolate and 1 part of fresh cream.
Sarvi, you can use any kind of flavors that you want to use. Like in the filling, you can use any flavor, or you can make any type of filling and use it. Okay, perfect. You can use all kinds of flavor, whichever you want to use. Orange, butterscotch, rose, पिस्ता, जो भी चाहिए है आप इसमें डालोगे. ठीक है. So if you're using ganache, you can work accordingly. If you're using buttercream, you can use that. How did you melt white chocolate? I haven't melted it actually. I had it outside on room temperature for the last 1.5 hours, and it is quite soft right now. White chocolate means white chocolate compound, right? Yep, absolutely. White chocolate is white chocolate compound. Okay, Dakshita, there was one more question. Yep. So somebody's asking that, ma'am, can you give some tips for making the macarons in rainy season, as it's usually very humid? So you will have a longer resting time. Uske siva, you'll just have to be very, you'll have to reduce your temperature to 145, which I'll be dealing it in the baking section. Except for that, I don't think there are a lot of major changes. The recipe remains the same. Yep. Okay. And So I'm just a whipping lot of up ganache for a minute. That's it. ओके सो अभी जो हमने गनाश बनाया था हम लोग बस उसको हल्का सा विप कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली जब आप विप करते हो अपने गनाश को तो उसको एक थोड़ा अच्छा टेक्सचर मिल जाता है सो सिंस हम उसको एज अ फिलिंग यूज कर रहे हैं इसलिए हम उसमें ऐड कर रहे हैं रेशियो फॉर गनाश इज 1:3 where 1 stands for your white compound and 3 stands for cream. Yes, Sonali, absolutely correct. Yes, Aparna, मैं भी आपका क्वेश्चन पूछती हूँ. To use for chocolate macaron. Okay. With this only, I add the color. I am using a purple candy color right now. For your ganache, prefer using candy colors or gel colors. Brand for candy color is Chocolate. Brand for candy color is Chocolate. chocolate. No, it's not visible. साइड में होगा बहुत ज्यादा आप थोड़ा लेफ्ट में ले आओ हाँ Chocoroost. 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 ओके चौकोरूस ओके सो अभी हमने क्या किया है हम लोग अपने जो हम लोगों ने गनाश बनाया था उसमें हम लोग कलर ऐड कर रहे हैं पर्पल कलर ऐड कर रहे हैं जब भी आप अपने गनाश के साथ काम करते हो एंड उसमें आपको कलर ऐड करना होता है तो या तो आप जेल कलर्स यूज करते हैं और या तो फिर आप यूज करते हैं पाउडर कलर्स ओके उसके अलावा कोई कलर्स मत यूज करिएगा अदरवाइज आपको क्या होगा स्पेशली लिक्विड कलर्स नहीं क्योंकि आप देखोगे कि जगह जगह पे आपको ऐसे पैचेस पैचेस जैसा मिल जाएगा ओके So now if you see these macaron shells, guys, they have a film on top. They are not sticking to my hand. If you see right now, can you see they have dried out? यस सो आई थिंक सबको अभी दिख रहा होगा कि कैसे वो ड्राई आउट हो चुके हैं हमारे मैक्रोन्स ऊपर से देख के लग रहा है सूख चुके हैं वैसी वही चीज चाहिए आपको अरे जैसे देखा नहीं कि आप कोई भी बैटर बनाते हो तो अगर उसको बाहर छोड़ दो तो ऊपर से ऐसे हल्की सी एक पतली सी लेयर बन जाती है एकदम ऐसे सूखा सूखा सा हो जाता है ऊपर ऊपर से बेसिकली वही चीज हमें करनी है मैक्रोन में ओके So we will be baking macarons at 160 degree. If you want, you can also bake them at 145 degree. ठीक है? हम लोग macarons को 160 पे bake कर रहे हैं. If you want, you can bake them at 145 also. You need to Dakshita, clean. your voice is not clear. Can you please get a little close? Is it fine now? Yeah. Okay. So we will be baking them at 160 degrees. Two temperatures which we normally use for baking is 145 or 160. ठीक है? And what is the timing for it? I'll be telling. अभी पूरा बता देंगे वो पीछे का है. Okay. ठीक है? So
I was waiting for you to convert it into Hindi actually. अच्छा, ओके, सॉरी। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं अपने मैक्रोन बेकिंग की, तो बेसिकली दो टेम्परेचर्स हैं जो हम यूज करते हैं। एक है 160 डिग्रीज और दूसरा है 145 डिग्रीज। ओके, ये दो टेम्परेचर हो गए आपके। एंड अभी हम बताते हैं आपको कि टाइम क्या होता है। यस दक्षता। For baking, you need to preheat your OTG at both the rods on plus your pan on. You need to preheat your OTG to 160 degrees, which takes approximately 9 minutes. And post that, you keep your tin inside, let them bake for 10 to 12 minutes. Uske baad, switch your OTG off, open the glass डोर। वाला जो वो होता है for another 8 minutes. Let the macarons be inside. Okay, and post 8 minutes you can bring them out, let them cool down, and then pick them up from your parchment paper or silicone. ठीक है? ओके, सो जब आप बेक कर रहे होंगे अपने मैक्रोन्स को ओटीजी में, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने ओटीजी को प्रीहीट करना है। 160 डिग्रीज पे आप प्रीहीट करोगे अराउंड 9 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपको वही सेम 160 डिग्रीज पे ही आपको उसको बेक करना है 10 से 12 मिनट के लिए। ओके, एक बार आप 10 से 12 मिनट के लिए उसको बेक कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करोगे कि आपका जो ओटीजी का जो डोर होता है, राइट, मतलब हाँ, डोर होता है ना, glass उसको आप, इसको ग्लास डोर होता है ना, उसको आप खोल दो। एंड बट खोलने के बाद आपको अपना मैक्रोन्स को बाहर नहीं निकालना, उसको अंदर ही रहने दीजिएगा, ताकि धीमे धीमे करके वो टेम्परेचर चेंज हुआ। एकदम से निकाल लोगे तो टेम्परेचर बिल्कुल से उनके लिए गिर जाएगा। जैसे ही गिर गया ना, बिल्कुल खराब। इसीलिए Yes. बोल If रहे you हैं कि do उसका that बस दरवाजा खोल immediately, के, हाँ, if you do बस that immediately, you're gonna have cracks on your macaron shells, which we do not want. So I'll just tell you. Abhi, suppose the macarons are baking. Okay. Suppose they are baking. I'll just open them a little. जैसे ढक्कन खोल दिया थोड़ा सा. Okay. And then we will just let them sit inside for the next 8 minutes and then bring them out, let them be on room temperature for another 15 minutes and then pick them up from the sheet you baked them on. यस। सो क्या करना है आपको ओटीजी में, सबसे पहले 10 मिनट के लिए प्रीहीट करोगे, अरे सॉरी 9 मिनट्स के लिए प्रीहीट करेंगे 160 डिग्रीज पे। दोनों रॉड्स ऑन रहेंगे एंड आपका फैन ऑन रहेगा। ओके, उसके बाद 160 डिग्रीज पे आप 10 से 12 मिनट के लिए उसको बेक करोगे। जब बेक हो जाएगा तो आपके जो अवन का जो दरवाजा होता है उसको थोड़ा सा खोल के वैसे ही उसको वहां पे रहने दीजिए। उसके बाद 8 मिनट के बाद क्या करना है आपको, फिर आपको अपना मैक्रोन्स को फाइनली बाहर निकालना है। जब आप देखोगे कि यस अब वो प्रॉपरली थोड़े ठंडे हो गए हैं, तब आप उसको अपने जो शीट होगा उस पे से उठा सकते हो। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो मैक्रोन है उसके ऊपर क्रैक्स ना आए। ओके, Okay. So we have our macarons baked yes, almost. yes, yes, the baking should have stopped by when you are opening your door. No, you are done with your baking, then you are opening your door. Okay. What if you live in a humid place? If you're staying in a humid place, increase the resting time for your macarons and bake at 125 degrees. Oh, sorry, bake at 145 degrees and increase your resting time. Please check for the film. Uske baad bhi you put it inside for baking. If it's still sticky, if it's still sticking to your fingers, it means that the film has not formed. Okay? Okay. Okay. No, Ali, take it for 10 to 12 minutes. It will be done in 10 to 12 minutes. How do you And know if but it's yes, done it in 10 just, minutes or 12 minutes is you look for a feet. Macarons may there is something known as a feet. What is a feet? I'll tell you that once that feet starts to appear, if it's 10 minutes, you know. If it's appearing in 12 minutes, you'll also know. Okay. And okay. other 10 minutes may you pull them out
and they're still sticky or they're very soft to touch, it means that it's not done. Okay. No, don't do a toothpick test inside them. You will get the cracks. Okay, I will quickly repeat this whole baking process in English also. So, in order to bake your macarons, what you're going to do is you are first going to preheat your OTG for 9 minutes with both of your rods on and your fan on. Once you're done with preheating at 160 degrees, open your oven, put your macarons in them, bake them for 10 to 12 minutes for 160 degrees. Once you're done baking, open the door of your OTG for and leave your macarons in them for around like what do you say, for around 8 minutes, and then after 8 minutes you can finally take them out, and once you see that yes they have cooled down, then you can finally do the filling and you can finally have them. How you will know that your macarons are done? You will be able to see the feeds in them. Now, what are feeds? Don't worry, we will show you that too. But just let them bake. Okay, once they'll be baked, then we will show you that how it's done. Okay, one basic question that I'm getting a lot is, can we bake them in microwave and on gas? No, I do you not can. teach macaron baking on gas or on microwave because you need a constant temperature for your macarons, which is not possible on gas or microwave. If you want to give it a try in microwave, go ahead and do it. I am not suggesting it, but again, you're free to experiment. Yes. So when it comes to आपका गैस के लिए या फिर आपका जो माइक्रोवेव होता है उसके लिए, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको एक प्रॉपर वो देना पड़ता है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है आपको आपके मैक्रॉन्स में, जो कि बेसिकली माइक्रोवेव्स और गैस में काफी डिफिकल्ट होता है. माइक्रोवेव में आप ट्राई कर सकते हो, बट काफी डिफिकल्ट है कि आपको वो प्रॉपरली आ जाए. बट आप चाहें तो माइक्रोवेव में ट्राई कर सकते हैं, बट गैस पे प्लीज मत ट्राई करिएगा बिकॉज वो नहीं होता है. एंड यस, अगर आप कोई भी बेकिंग कर रहे हो तो वो हमेशा कन्वेक्शन मोड में होगी इन माइक्रोवेव, एंड यू कैन कीप द टेम्परेचर एंड टाइमिंग सेम. Perfect. Next, you white ganache, guys. It's 3 part of chocolate with 1 part. Oh, sorry, 1 part of chocolate with 3 parts of cream. 1 part means 1 tablespoon, 1 cup, whatever quantity you want to make. And uska triple will be your cream. Okay. We have our macarons here. Can you see the feet, guys? Okay. Can you first look at the base and then slowly look at this? Can you look at this feet? दक्षता पीछे से हाथ लगा दोगे ना तो आई थिंक वो आ जाएगा, या फिर आप एंगल थोड़ा सा चेंज कर लो. इसके अगेंस्ट आई गेस ज्यादा अच्छे से दिखना चाहिए. ऊपर से आपको ऐसे लगाना पड़ेगा. नहीं, इधर साइड से ऊपर. नहीं नहीं, इधर लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है, उधर साइड से शाइन कर रहा है. लेफ्ट Hold on. लेफ्ट. Hold on. Yeah, these are baked, guys. Wait, we are showing you that how a baked macaron looks. हाँ, अभी ठीक है. Can you look at this feet, guys, which is formed? थोड़ा सा और रिफ्लेक्ट हो रहा है दक्षता. आप उसके बजाय अपने हाथ से वैसे कवर करो. Let's take another. Okay. यार इसके अगेंस्ट तो दिखना चाहिए है अच्छे से. आई एम अज्यूमिंग. नहीं नहीं, आपके राइट साइड. अच्छा, आप राइट साइड पे हाथ लगाओ और ज्यादा. अभी ठीक. ओके, हल्का सा दूर करो, आप हल्का सा दूर करो. Guys, is the feet visible? Guys, Okay, feet so are actually very small. And बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये ओके, कैसा अभी दिखेगा? ठीक था. अभी दिख रहा था थोड़ा सा. Okay, hold on. I have a. Can we reverse the camera? Can you see this abhi?
हाँ, थोड़ा सा दूर करो आप दक्षिता, हल्का सा दूर करो बस. परफेक्ट परफेक्ट. स्टॉप. ओके. Is So the yes, feet visible, guys, now? yes, they are. Okay, So so अभी this आप is देख what we सक are looking for. ओके, सो अभी आप देख सकते हो कि जब आपका मैक्रोन बिल्कुल ऐसे दिखना पड़ेगा, जो आप देख रहे हो ना कि बीच बीच में ऐसे आपको जो हल्का सा क्रैक सा हो, वहां पे फीड्स बोलते हैं इन्हें. तो जब आपको ऐसे फीड्स दिख जाएंगे ना, तो इनको कहते हैं, इसका मतलब है कि आपको प्रॉपरली जो है आपका वो पूरा बेक हो गया मैक्रोन. ओके. Perfect. Somebody is asking, it fell down and it did not break. Thankfully, no, it did not. Why do you guys want them to break though? बहुत मेहनत लगी है यार, ऐसे टूट जाता तो मेरा ही दिल टूट जाता यहाँ पे तो. So let's And yes, somebody was asking 145 degrees. You're going to bake your macarons at 145 degrees if you live in a very humid place. So in that case, what happen is, instead of preheating and baking your macarons at 160 degrees, you bake them at 145 degrees. Okay. Whatever will be your preheating time, on that temperature only, you are always going to bake your cake. It can never be like you are preheating at 145 and baking at 160. Do not do that ever. Okay. okay, perfect. So I am not looking for a very thick frosting. So I am not gonna, whip up my entire ganache and then use it. But if you're looking for a very thick middle frosting, you can do that as well. So yeah, I'll just have a little frosting and then top it up with the another shell, and that is it. Okay, if you want, you can do a very thick buttercream frosting, or you can even whip up your ganache and then use it. I'm just trying to find one with the same size. Yep, this fits better. So yep, just a thin layer of frosting or the filling in center, and that is it. If you want, you can do a thick buttercream frosting also. Post you have made an entire macaron, you let them sit in fridge overnight and consume it the next day, which is known as maturing of macarons. ओके. सो एक बार आपका क्या होगा कि आपका मैक्रोन पूरा बन गया है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि आप अपने मैक्रोन बन गया, उसके बाद आप उसमें फ्रॉस्टिंग कर सकते हो. अब फ्रॉस्टिंग आपको कैसी करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. ओके. थिक फ्रॉस्टिंग करनी है, थिन फ्रॉस्टिंग करनी है, किसकी करनी है, बिल्कुल आप पे डिपेंड करेगा. जब एक बार आपका ये मैक्रोन पूरा बन जाएगा, आप उसको तुरंत नहीं खा सकते हैं. आई नो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आपको वेट करना पड़ेगा, तुरंत नहीं खाना है. उसको आप ओवरनाइट रखोगे, यानी कि रात भर आप उसको रखोगे फ्रिज में, एंड देन नेक्स्ट डे आप उसको खाएंगे. ओके. Perfect. How do you store them? You store them in a fridge in an airtight box, even for maturing, and even after, even for storing purposes, you store them in an airtight box in a fridge. Okay. Once it cools down, yes, तभी वो soft से hard होंगे. But if they are very jiggly, you know that they're not done. This is same for a cake. If the center is jiggly, once they're out of the OTG, you know they're not done. And you can store your macarons for up to 5 days. You can store ओके. them for 5 days. फिर आपने एक बार अपना मैक्रोन पूरा बना लिया, तो आपको क्या करना है कि आपको उसको जब आप स्टोर करोगे अपने मैक्रोन को, तो आप अपने मैक्रोन को 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो फ्रिज में, एयर टाइट कंटेनर में रख के. ओके. एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में 5 दिन के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हो. यू कैन स्टोर योर मैक्रोन्स फॉर 5 days इन फ्रिज इन एयर टाइट कंटेनर. ओके. Absolutely. I guess that's all. Almond flour, aquafaba, cream cheese recipes you'll find. I always prefer if you can buy them from market. The chances of getting a failed batch reduces. However, if you're very experimental, like I was at a time, you can again go ahead and make it at home. I usually get it from market, but at times also use homemade almond flour. Okay. Yes, you ओके. can use homemade almond flour.
Dakshita, there was a question. So somebody had asked that, what was it? Yeah, once they are baked and still they are little sticky on above, then what can we do for that? You can bake them again. Put them inside OTG. Taste them right then and there, and again keep them back for another 3-4 minutes. Okay. Now I will quickly address few of the questions that we have already answered, but I will just quickly repeat them so that it gets easy for everyone. ओके मैं एक बार जल्दी जल्दी जो कुछ क्वेश्चन से बहुत ज्यादा आए हैं मैं उनके लिए जल्दी से वो सारे के आंसर्स एक बार रिपीट कर देती हूँ उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस हम देखेंगे ऐप के ऊपर ओके सो सबसे पहली चीज इसमें से कोई भी चीज रिप्लेसेबल नहीं है all the four products are irreplaceable. You need to use aquafaba, castor sugar, icing sugar, and almond flour. Nothing is replaceable here. आमंड फ्लावर कैस्टर शुगर आइसिंग शुगर और आमंड फ्लावर में से कुछ भी रिप्लेसेबल नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ वही यूज करना है after that if you want to use the aquafaba and the almond flour at home that recipe is already given at Dakshita's Instagram ID. I will show you where you are going to find them. Okay, aqua flour और almond flour की aquafaba और आमंड फ्लावर की जो रेसिपी है अगर आप वो घर पे बनाना चाहते हैं तो वो आप दक्षता की आईडी पे आपको मिल जाएगी शेल्फ लाइफ एक्वाफाबा की कितनी है उसके कंटेनर पे लिखी होती है ओके उसके बाद द थर्ड क्वेश्चन दैट इज कमिंग अ लॉट इज व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ क्रीम ऑफ टार्ट इट वाज 1/8 टीस्पून 1/8 टीस्पून हम लोगों ने क्रीम ऑफ टार्ट यूज किया था उसके बाद और क्या क्वेश्चन थे हाँ हीटिंग का so you are going to preheat it for 9 minutes at 160 degrees bake it for around 10 to 12 minutes and once they are baked keep them inside the OTG for 8 minutes while their uh, door is open the OTG's door is open once they are cooled down then you can finally do the filling and keep them in the fridge overnight in an airtight container for getting them matured. Okay. For storing them, you can store them for 5 days in an airtight container in a fridge. Okay. Yes, both the rods are going to be open with their fan also being opened. Okay. जब भी आप सॉरी जब भी आप ओटीजी में बेक कर रहे होगे तो दोनों रॉड्स ऑन रहेंगी एंड फैन ऑन रहेगा सारे के सारे प्रोडक्ट्स और पीडीएफ आपके ऊपर दिए हुए हैं तो अब मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि ये सब कुछ कहाँ मिल जाएगा okay also all the questions that are coming here for the pricing part guys understand one thing the pricing depends on where you are you need to do little bit of research and see that at what price you are finding the macarons around your area and then accordingly you can sell them okay pricing जो है वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आपके एरिया में कितने का मैक्रोन बिक रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्राइसिंग चेक करोगे एंड देन उसके बाद आप उसको रखोगे ओके Neetu, if your macarons are not getting look it is not possible that it will not get dried after 45 minutes if they are not getting dried after 45 minutes please try keeping them for a little more time and they will get dried up don't worry 45 minutes mein they will get dried up approximately what price it will be around 60 rupees per piece. If you a basic price in my area is 65 to 70 rupees per piece. 60 से 70 रुपए के बीच में पड़ जाता है एक पीस मैक्रोन का. You cannot do a toothpick test for your macarons. Insta ID will be shared. In shop, they do not remove from fridge or something because they have boxes which are either aligned in fridge or the counter which they keep in at the cold counter. Right? They do not keep their pastries and cakes in a warm counter. Perfect. Komal, if you want to understand how the macarons have baked, you will check and you will find those feeds there. If you can see those feeds and you can see that your macarons are not jiggly or anything like that, that basically means that your macarons are done.
Okay. Saloni, we'll take the next questions over the group if it's okay. Yeah, And sure. I we'll will move just to the next. quickly share them key. Okay, I will quickly share my screen and will show them that from where they can find the recordings, PDF, and all the products, and where you are going to find your what do you say, where you can ask all your questions and queries. Okay. मैं जल्दी से अभी आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, कहाँ पे आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, कहाँ पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड आपको दक्षता की इंस्टाग्राम आईडी कहाँ पे मिल जाएगी. ओके ओके एंड यस सर्टिफिकेट्स टू. So yes, I shared my screen and I hope my screen is visible. Dakshita, is my screen Yep, it is. Okay. So what you're going to do is you are going to open your Pankhuri app. आप सबसे पहले अपना Pankhuri app open करेंगे. Once you open your Pankhuri app, you are going to find 3 lines at the bottom of the app. आपको app में सबसे नीचे 3 lines दिखेंगी, उनके ऊपर click करिए. Once you click on them, you will find an option called as orders and bookings. आपको orders and bookings का एक option दिखेगा, उस पे जाइए. And once you will go to orders and bookings, you will be able to see your course there. आप जैसे ही orders and bookings में जाएंगे, आपको वहाँ पे आपका course दिख जाएगा. अपने course के ऊपर click करिए. Once you click on your course, you will be able to see an option here called as download certificate. You can click on that and you will be able to download a certificate. आप download certificate के ऊपर click करके certificate जो है वो download कर सकते हैं. After that, if you have any question or queries, you can just click on go to course group and you will be able to ask all your question and queries here. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी होता है ये सब कुछ बनाने के लिए, तो आप गो टू कोर्स ग्रुप पे जा करके अपने सारे के सारे क्वेश्चन एंड क्वेरीज के आंसर्स पूछ सकते हैं. ओके. After that, you can see an option here called as view recordings. So the recordings are uploaded on the app by 9 p.m. So you can just click on view recordings and you will be able to view the recordings and you're going to have lifetime access to it. आप view recordings पे click करके recordings check कर सकते हैं and आपकी ये जो recordings है वो lifetime के लिए यहाँ पे रहेंगी, तो आप जब चाहें जितनी बार चाहें उसको देख सकते हैं. After that, for the PDF part, you can just click on Masterclass Notes and you will be able to get the PDF here. PDF के लिए आप Masterclass Notes पे click करके PDF को check out कर सकते हैं. After that, यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद आपको सारे के सारे products मिल जाएंगे. You will be able to see all the products here. They were here right before the class. I don't know why they are not reflecting right now. But don't worry, I will just check with the team and you will find all the products here. Okay. अभी आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे सारे के सारे products मिल जाएंगे, whether it's the aquafaba, the castor sugar, almond flour, everything will be here. Okay. सारे के सारे products आपको अभी यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे उन click करके उन products को buy कर सकते हैं. After that, if you want to follow Dakshata on Pankhuri app, you can just click on follow trainer and you will be able to follow. Dakshata को Pankhuri पे follow करने के लिए आप follow trainer पे click करके follow कर सकते हैं. After that, for her Instagram ID, you can just click on her picture and you will be able to see her Instagram ID here. You can just click on that and you will be able to follow her. Okay. Dakshata को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप बस यहाँ पे जो आपको दक्षता की पिक्चर दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करिएगा एंड यहाँ पे जो आपको रेड कलर का लिंक दिख रहा है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दक्षता के इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाएंगे एंड यहाँ पे आपको वो एक्वाफाबा एंड जो आमंड फ्लावर है उसकी आपको रेसिपी मिल जाएगी. ओके. So yes, this was all about today's class and this was all about today's session. I hope that you all have liked and loved the session.
If you have, please go on Google Play Store and rate us. That will be really beneficial for us so that we can keep coming up with more and more of these sessions. And please do let us know what else you want so that we can come up with those. Okay. सो आई होप कि आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज हमें गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के रेट करिए, बिकॉज उन्हीं रेटिंग्स की वजह से हम आपके लिए इतने सारे वंडरफुल सेशंस ला सकते हैं. तो आई विल रियली रिक्वेस्ट यू कि आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा, बट वो हमारे लिए बहुत होता है. Just go there and rate us. And you can also follow Dakshata just by clicking on that link. Go follow her. She keeps on updating loads and loads of recipes, and you're going to learn a lot of things. Okay? Perfect. Thank you so much, guys, for joining in. And I look forward to see you all in some other course of ours. So, yes, bye, Dakshata. So, yes, guys, I hope to see you all in some other courses. Till then, bye bye, take care, and have a great day, guys. And I hope you all have liked us and you will be rating us and reviewing us. Okay? So, bye bye, take care, have a great day.